गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सो फोर्थ क्लास हमने लास्ट क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंप्लीट करा था। आज मैं आपको वो चैप्टर डीजी पे एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो हमने उसमें 3 पोल्यूशन पढ़े थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। उनके कॉजेस पढ़े थे, एयर पोल्यूशन क्यों होता है और हम उनको कैसे रोक सकते हैं, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है हम उनको कैसे रोक सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है हम उनको कैसे रोक सकते हैं। तो आज यही चीजें मैं आपको डीजी पे एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। It's really suffocating here. Why do you think I'm coughing? Let me show you. The air is contaminated by the harmful gases released by factories, vehicles, and the cutting of trees. This is known as air pollution. The harmful gases released into the atmosphere are known as air pollutants. But how do you think the air gets polluted? क्लास, आप जो ये फैक्ट्रीज के ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी बहुत लंबी लंबी चिमनीज होती है, लॉन्ग लॉन्ग पिलर्स, उसमें जैसे जो ये ब्लैक ब्लैक स्मोक निकलती है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आप का सबसे बड़ा रीजन है और सबसे डेंजरस रीजन है, बिकॉज जो गैसेस और एयर निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके एक ब्लैक स्मोकी लेयर बना देती है और उस वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गंदा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट, और ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे एयर पोल्यूशन का। Air pollution is caused by both natural and man-made causes. Forest fires, sandstorms, and volcanic eruptions are a few examples of natural causes of air pollution. But these instances happen occasionally. So, what do you think is the main pollution? The man-made sources of cause. These sources include excessive use of fossil fuels such as diesel, petrol, kerosene, and coal. These fossil fuels are used in large quantities by factories, vehicles, and for household purposes. क्लास, आप ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक स्मोक, ये चेक कर रहे हो, ये सारा रीजन है, सबसे बड़े रीजन है यहाँ के। आजकल क्यों आपको बार बार बोला जाता है कि यूज सी कार्स, बिकॉज सीएनजी जो है, कंप्रेस्ड पेट्रोलियम जो गैस है आपकी, वो आपकी 100% इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। बट पेट्रोल डीजल से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो सबसे ज्यादा आपके इन्वायरमेंट को खतरा, मतलब आपके सबसे ज्यादा आपके इन्वायरमेंट में आपको पोल्यूटेड करता है। तभी कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने कहीं पर भी जाना है, लाइक नियर बाय भी जा रहे हैं, तो यूज योर रादर देन ट्रांसपोर्ट यूज करो, अपना कन्वेंस यूज करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ, लाइक ई रिक्शा लो आप लोग, आजकल ई रिक्शा चल रहे हैं बहुत ज्यादा, या बैटरी वाली कार्स है, बैटरी स्कूटीज है, मतलब आपको व्हीकल, जिस व्हीकल से आपके पोल्यूशन, आपका एयर पोल्यूट हो रहा है, उसको छोड़ के आप उन पे आओ जो आपके इन्वायरमेंटल फ्री है, मतलब इन्वायरमेंटल है, फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है। बिकॉज अगर इसी हिसाब से एयर पोल्यूशन बढ़ता रहा
तो अब आने वाले टाइम पे जब हमारी और 5 10 7 10 12 साल बाद एयर में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा दैट यू कैन नॉट ब्रीथ इन द ओपन एयर, कि आप लोग प्रॉपर ब्रीथ भी नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में। On burning, these fuels release harmful gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxide. These gases form pollutants of the air. How can I? A common practice followed by humans is the burning of garbage that contains plastic and rubber. The burning of plastic and rubber releases poisonous gases into the atmosphere. Are you ready for a debate? Here goes. Is it right for people to burn waste outside their homes to avoid infestation of mosquitoes? Two teams and talk for and against this topic of discussion. Click the continue button to proceed. Do you know the kind of effect these gases can cause to life? Let me show you. The harmful gases released into the atmosphere mixes with the water vapor in the air to form acids, which eventually fall to the ground as acid rain. This rain affects the leaves of plants and results in premature leaf falling. Another such effect of air pollution is smog, fear of smoke and fog. Smog causes asthma, cough, and wheezing in humans. Coat over the leaves of plants, preventing them from performing photosynthesis. Excessive inhalation of these harmful gases in the air, such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, and carbon monoxide, causes heart diseases, respiratory problems, chest pain, unconsciousness, cancer, and death in humans. This is not just it. There is more. This we know is the Taj Mahal in India. The walls of this monument have been corroded by acid rain caused by the pollutants produced by industries manufacturing rubber, chemicals, automobiles, and oil in the nearby area. The acid rain is responsible for corroding the marble of monuments. It is known as marble cancer. The dust particles emitted by factories in the area near the Taj Mahal have contributed towards the yellowing of the marble. What do you think were the disastrous effects of the Bhopal gas tragedy in India and the volcanic eruption of Mount Pinatubo in Philippines in 1991? Discuss this in class and share your ideas. Click the continue button to proceed. तो क्लास हमने देखो अभी तक पढ़ा कि क्या सोर्सेज है, किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है। देयर कैन बी ह्यूमन मेड और नेचुरल। ह्यूमन मेड, हम जो इंडस्ट्री से जो ब्लैक स्मोक निकलती है, व्हीकल से जो स्मोक निकलती है, उस वजह से ये तो आ गया होगा आपका ह्यूमन मेड। नेचुरल मेड जैसे कि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर होती है, वॉल्केनिक करप्शन होता है, तो ये नेचुरल होता है। तो इन दोनों तरीकों से आपके एयर पोल्यूशन होते हैं। ठीक है। जब एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, जब वो गंदे एयर पोल्यूटेंट एयर में मिक्स होते हैं तो वो जो एयर होती है उसको पोल्यूट करते हैं, उसको गंदा करते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट वेरियस एक्टिविटीज रिलीज हार्मफुल गैसेस व्हिच पोल्यूट द एयर।
और ये एयर जब पोल्यूट होती है इसका इफेक्ट क्या होता है, इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स लिविंग बीइंग, कि जो हम जैसे लोग रह रहे हैं उनके रहने पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट होता है इसका। अब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। Did you know that at any given time, almost half of the world's hospital beds are occupied by patients suffering from waterborne diseases? Human activities are largely responsible for polluting the water, leading to severe diseases. When an outbreak of a disease occurs, man-hours at work suffer, and so does the economy. Thus, water and the economy are closely linked. Let us find out more about water pollution. Water pollution is any chemical, physical, or biological change in the quality of water that has harmful effects on the health of any living thing which drinks, uses, or sewage, chemicals, silt, and other harmful elements mix with water and तो क्लास आप ये देख रहे हो जो इंडस्ट्रीज, कुछ तो इंडस्ट्रीज का जो मतलब वेस्ट होता है वो एयर में चला जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज का, केमिकल इंडस्ट्रीज का मोस्टली वेस्ट उन लोगों ने सीवेज बना रखा होता है अपनी इंडस्ट्री से, सीधा रिवर में डालते हैं, वो साफ हो जाता है। सेम यहाँ पर है, जो गंद, जितना भी गंद है, मतलब जो खेत है वो सारा पानी में मिक्स करते हैं और इससे क्या होता है, ये पोल्यूटेंट्स वाटर में जाके वाटर पोल्यूटेंट्स बना देते हैं और इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। pollution, therefore known as water pollutants. Human activities are largely responsible for water pollution. The effects of these activities may be direct or indirect. You may have seen pollutants being discharged directly into a water body through pipelines. This is known as point source pollution. Pollution can be easily traced as it comes from one particular. Often, especially during the rainy season, pesticides from farms mix with runoffs. They contain harmful substances that are discharged into the river. This discharge is indirect as the pollutants are carried by the water running off the fields. This is known as non-point source pollution and cannot be easily traced as it comes from a vast area. Various sources such as domestic waste, industrial waste, and agricultural waste pollute the water. Household activities such as cooking, washing utensils and clothes, bathing, and excretion all generate sewage. Sewage materials such as food are organic materials. Microorganisms can decompose these organic wastes with the help of oxygen. The amount of oxygen required for decomposition in water is known as the biological oxygen demand, or BOD. Soaps and detergents contain inorganic materials such as phosphates and nitrates. Did you know that phosphates are nutrients and promote the excessive growth of algae in the water? This is known as algal bloom. Algal bloom deteriorates the quality of water, creates the life within that water body. It may also be toxic, causing harm to living beings. The wastewater has a biological habitat.
एग्रीकल्चर से हमारा पानी कैसे पल्यूट होगा, ये देखते हैं क्लास। The contribution of agriculture to water pollution is mainly through the adding of chemical nutrients and soil particles in the process of erosion. The erosion of soil particles into the water runoff is known as sediment pollution. Sediment pollution acts as a barrier, preventing the sunlight from penetrating the water. What happens when plants do not receive enough sunlight? The blocking of sunlight prevents plants from photosynthesizing. Chemical fertilizers and pesticides contain nitrogen and phosphorus. Through runoff, they seep into the ground, polluting the groundwater. This is known as leaching. In lakes where there isn't much flow of water, the plant nutrients normally trigger a process known as eutrophication. Eutrophication is the process that occurs in an aging water body, whereby it gradually builds up its concentration of plant nutrients, generally rich in nitrates and phosphates. This makes the water body shallow, thus making life inside it difficult with increased BOD. Effluents from industries and homes accelerate this process. The presence of chemicals such as fluorides in drinking water causes fluorosis, an incurable bone disease. Radioactive pollution in water includes the discharge of radioactive waste from factories, hospitals, and nuclear plants into the water body. ओके क्लास, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा वाटर में होता है ड्यू टू केमिकल फैक्ट्रीज के जो केमिकल्स का वजह से एयर पोल्यूशन सब कुछ पढ़ा हमने। सो आई होप यू ऑल आर। थैंक यू क्लास।